Hello students, today we are going to discuss very important topic of current electricity, that is Kirchhoff's law. So Kirchhoff's law, that is mainly used to find out electric potential difference and electric current. You know, in Ohm's law there is a relation between current and electric potential. So that law is also used to find out electric potential and electric current, but in only simple circuits. Here, when we are having complicated circuits mean number of wires in the circuit, then this Ohm's law cannot be used to find out the electric potential difference and current in the device or in the circuit. So in complicated circuit, to find out the electric potential and current, we will use Kirchhoff's law. So there are two laws of Kirchhoff's. First one is Kirchhoff's current law, and it is also known as junction law. Current law and junction law. The current law mean we will discuss about the current, and it is also known as junction. So junction, you know that the point where number of currents, number of wires are connecting at one single point. So this is the we can say that this is the point J, junction, where the number of wires meeting at this point. So it states that the sum of all the currents entering the junction is equal to the sum of all the currents leaving the junction. So here I have a circuit of 5 resistors, 1, 2, 3, 4, 5 resistors, and in which current I1, I2, I3, I4 and I5 is flowing. So you see here the current I1, I2 and I5, these are the currents, those are entering the junction, and through the resistors R3 and R4, the current I3 and I4 leaving the junction. So according to the statement, we can write the sum of current entering the junction I1 plus I2 plus I5 is equal to I3 plus I4, or we can write I1 plus I2 minus I3 minus I4 plus I5 is equal to 0. So that is equal to sum of all the currents is equal to 0. And from this rule we come to know that sign convention. We come to know about the sign convention, where entering current is taken positive. You see here I1, I2 and I5 current, those are entering the junction taken as with positive sign, and the leaving currents taken as negative. This is a very important sign convention. And one more is this law obey the law of conservation of charge. Obey the law of conservation of charge, that is delta Q is equal to 0. Mean at this junction, mean to say that the junction cannot act as sink or source of charge. Sink and source of charge mean to say that at the junction charge can neither be created nor be destroyed. Mean whatever the current that is entering the junction, that will leave the junction throughout the wires. Suppose here we have a conductor and one more conductor, current is entering 3 ampere and through this wire 5 ampere, so leaving current should be 8 ampere. At this point, current or charge can neither be destroy, cannot be act as a sink or source. So this law obeys the law of conservation of
charge. So this is the very important. Now our second law is Kirchhoff's second law, also known as loop rule or voltage law. The first law is known as current law, junction rule, and Kirchhoff's first law. Now our Kirchhoff's second law, loop rule, also known as, and voltage law. So it states that the algebraic sum of all the voltage. In this law we will talk about the voltage. Algebraic sum of all the voltages. Voltage mean potential difference across the element. Element mean resistor. And EMF of the cell. EMF of the cell जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है किसका, सेल का, जो सोर्स होता है किसका, करंट का. इन एनी क्लोज्ड सर्किट, आपको पता करंट फ्लो करता है क्लोज सर्किट में, तो इन एनी क्लोज्ड सर्किट is always zero. Closed circuit, that is also known as loop rule, also known as, that's why it is also known as loop rule. तो ये किसके लिए applicable है, closed loop के लिए. So is always zero, that is delta V, that is change in potential, and the sum of EMF is equal to zero. So here we are using very important sign convention, very important that you must know. Sign convention क्या देखो. First of all, when you are going, suppose you have any closed circuit like this, closed circuit. So in closed circuit we can move clockwise and anti-clockwise. So first of all, you have to give the direction of your traversal. मीन टू से दैट जब आप किसी भी क्लोज सर्किट में फाइंड आउट करने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिव्स योर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल, मीन क्लॉकवाइज. आइदर यू कैन मूव क्लॉकवाइज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ, और एंटी क्लॉकवाइज. दैट यू हैव टू डिसाइड. In the closed circuit you have to give the direction of traversal of your. Okay, this is first one is this. Now second I will talk about the potential difference across the resistor. Suppose ये क्या अपने पास एक रजिस्टर है, ठीक है, और इस रजिस्टर में सर्किट में लगा रजिस्टर, ठीक है, क्लोज सर्किट में लगा एक रजिस्टर, एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल. आप जा रहे हो इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल, ये आपका ट्रैवर्सल है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो सर्किट में, ठीक है. तो और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. देखो आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है. मीन टू से दैट पोटेंशियल ड्रॉप इन रजिस्टर. So V is taken as minus IR. Potential drop with this negative sign. V is equal to minus IR. Mean to say that आप भी जा रहे हो, साथ में करंट भी उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो किसी रजिस्टर के थ्रू जब करंट पास करता है तो वोल्टेज क्या होती है, ड्रॉप होती है. तो पोटेंशियल ड्रॉप ले लिए तो विद नेगेटिव साइन, ठीक है. और ये भी हो सकती है सिचुएशन, ये आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल है बट करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ऑपोजिट. Okay, so here you are opposing the current, you are moving in this direction but direction of current is opposite in the resistor. So mean across the ends potential will rise. यहाँ क्या लिखेंगे, potential difference rise. So potential is taken with plus sign. This is very important, you have to follow the sign convention, this with plus IR. ओके, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर. और मैं तीसरी बात करूँगा किसकी, ईएमएफ ऑफ सेल्स. ओके, सो व्हाइल यू आर फाइंडिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल, सपोज देखो ये अपने पास है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल. मान लो किसी क्लोज सर्किट में क्या लगा हुआ, एक सेल लगा हुआ, और आप सेल का पोटेंशियल ईएमएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो आप जो मूव कर रहे हो, आप मूव करें देखो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. जब भी आप ईएमएफ फाइंड आउट करोगे तो आपने डायरेक्ट करंट, देयर इज नो नीड टू सी द डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट देखनी है अपन किसमें, रजिस्टर में, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ करंट अलॉन्ग विद योर ट्रैवर्सल, दैट यू हैव टू सी ओनली इन द रजिस्टर. जब आप ईएमएफ फाइंड आउट करोगे तो वहां पे आपने देखना ओनली योर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल. मीन देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, देन जो ईएमएफ होगा दैट इज विद पॉजिटिव साइन, सॉरी नेगेटिव साइन, सॉरी हाई टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल जाओगे तो वहां पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन। एंड अब ऐसे भी हो सकता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल है, देन यू हैव टू टेक अ पॉजिटिव साइन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन में, जहाँ पे पोटेंशियल, जहाँ पे आप देखो रजिस्टर में देखो, जहाँ पे करंट और योर डायरेक्शन ट्रावर्सल दोनों क्या है, सेम है, तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप। मीन टू से दैट आप क्या कर रहे हो, करंट को रीइंफोर्स कर रहे हो। और जहाँ पे करंट और योर डायरेक्शन अपोजिट हो, मतलब आप करंट को क्या कर रहे हो, राइज कर रहे हो एंड्स के ऊपर, तो पोटेंशियल क्या होगा, आई आर। यहाँ पे सिंपल है, हाई टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल नेगेटिव साइन, लो टू हाई पोटेंशियल विद पॉजिटिव साइन। ओके, तो लेट अस टेक वन इलस्ट्रेशन। आई हैव ड्रॉ वन क्लोज सर्किट। देखो इसमें क्या दो क्या है, सेल्स है, E1 और E2 उनका ईएमएफ है, और R1 और R2 के दो रजिस्टर्स है, ठीक है। तो अब हमने एक इक्वेशन करनी है। देखो हमारे पास सबसे पहले देखना क्लोज लूप है कि नहीं है। देखो ये क्लोज्ड है, क्लोज सर्किट है, तो क्लोज सर्किट में मैंने क्या कर लिया, पहले अपना डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल दे दी। मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल ये है, आई एम गोइंग क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। एंड स्टार्ट फ्रॉम एनी वन ऑफ द एलिमेंट। अब अपने पास में कितने कंपोनेंट है, 1 2 3 4, देयर आर 4 कंपोनेंट इन दिस क्लोज्ड सर्किट। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट कंपोनेंट। देखो अब मैं जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, देखो ऐसे मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल, हाई लो टू हाई पोटेंशियल, तो आई विल टेक इट्स पॉजिटिव साइन E1, E1 क्या इसका ईएमएफ है। ओके, अब देखो करंट भी इधर जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, सपोज करो सर्किट में करंट भी इधर जा रहा है, और मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, माई डायरेक्शन ट्रावर्सल आल्सो द सेम। सो पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप, तो आई विल राइट हियर माइनस I1 R1। ओके, अब यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे हम जा रहे हैं लो टू हाई पोटेंशियल, लो टू हाई पोटेंशियल, लो टू हाई पोटेंशियल, देन अगेन आई विल राइट हियर E2 विद प्लस साइन। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं इधर जा रहा हूँ, करंट भी इधर जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस साइन, दैट इज I1 R2 दैट इज इक्वल टू 0। देखो 1 2 3 4 टर्म्स आर देयर इन द इक्वेशन, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 एलिमेंट्स और 4 कंपोनेंट इन द सर्किट। सो जितने भी कंपोनेंट होंगे उतनी क्या देंगे, टर्म्स आएंगे अपने इसमें एक इक्वेशन में। So next we will solve the numerical related to Kirchhoff's law. So firstly you understand the Kirchhoff's first law and second law, and the difference between these two. One more, it obey the law of conservation of charge, law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Law of conservation of energy mean you know that जब क्लोज पाथ में हमने पढ़ा था प्लस वन में कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है, जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज होती है दोज आर व्हाट कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो वर्क डन इन क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू 0. So work done that is in the form of energy. So they obey the law of conservation of energy. Thank you.